all along the carpet, and Ashwit filling that place of that bowling department. And wait and see. I will go and cut it. Lovely delivery. What I'm talking about. He got ability of filling that deficiency of the bowling department. What Sneha Malemar has got. Someone who can bowl along the carpet. Someone can bowl sharp incoming delivery. This has been outstanding cricket from both the teams. Because if you can see that, after hitting a boundary, bowler Ranjit is got a wicket. And here also, after getting a punishment, Ashwit, and he bowled one good delivery, very next ball he got a wicket. This has been outstanding cricket. It's a good battle is going on between these two teams. NM Cricketers Mangalore versus team Sneha Malemar. It's 15 for the loss of 3 wicket in the over number. Second is in progress. 16 for the loss of 3 wicket and over number second. And what a comeback here by Ashwit. A new batter in Taufik, the hero of the last night. Oh, lovely delivery. Starts with a beautiful again. This is what Ashwit can do. Of course, he is from our neighboring state, Kerala, and neighboring district, Kasaragod district, represented for Sai Naman and some teams. A very good bowler, especially in the power play. And so far, after that, he got a punishment. He bounced back very well. Just a lovely delivery indeed. Absolutely, that ball is almost targeting the middle stump. Taufik, very lucky that last moment he got a bat onto that. Otherwise, that ball going to crash the middle and leg stump of Taufik. Taufik, one of the good batter, the side of NM Cricketers Mangalore. He's got a fantastic form. What a innings he's played yesterday. Every crowd sat at Konaji ground enjoyed his batting outside and off stump wicketkeeper. This is a mistake what the wicketkeeper are doing there. Of course, it's a wide ball, but he knew to stop that one. 1+1, 2 bonus run here for NM Cricketers Mangalore. Even the NM Cricketers have lost 3 wickets, but they're really not bothered about the runs what they got. They got a absolutely healthy run. 19 on the board for the loss of 3 wicket. Ashwit, final time in this over. Right arm over the wicket. This time lofted up and over the head of Yatin, but ball will not going to travel quickly because of that stroke which is played against the direction of the wind, and so that Yatin managed to stop the ball just inside the boundary line. But a couple of runs. One more productive over, even though it's a wicket taking over, but still it was a wicket productive over for NM Cricketers Mangalore. They got 10 runs from that over, and after completion of 2 overs, equal result for both the team. 21 runs for NM Cricketers Mangalore. At the same time, 3 wickets for team Sneha Malemar. Now we have a chief guest. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಣ್ಯರಾಗಿ LIC ಇದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024. Respected Manoj Kumar, development officer of LIC. 21 for the loss of 3 wicket, and now third over will going to start and spread out speed. After that, power play, we can see that so many bodies out there in the deep. One a deep square leg and deep mid wicket and deep long on and long off and a deep cow point. That 5 fielders outside the circle. Short fine leg, short mid wicket, short back point in fact, and extra cover. The fielder inside the ring saving the singles. Kiran brought into attack. First delivery single taken. Second time in this over. This is what Kiran can do here. Absolutely fantastically ball. Pitched in the middle stump. And Taufik is in a 2 mind whether go for the big shot or not. Because he doesn't know what kind of delivery. Whether it is incoming delivery or it is outgoing delivery. By judging that, ball just passing around his legs. Kiran again. Right arm over the wicket bounce. Lekatar up for extra bounce as well. Negotiated very well. Oh, it's going to be an unforced error from that fielder.
Really not required in the occasion there from Mustafa because there's a certain single, but Mustafa wanted to make a quick work, but made a misfield, and both the batters grabbing the opportunity, convert that single into two. Full toss, couldn't manage to take the advantage of that full toss. Taufik is not really expecting full toss there from Kiran. Otherwise, he's the kind of batsman, he can hit very good deliveries into the fence. But unfortunately, there's a hittable delivery. He couldn't manage to hit that one properly. 25 for the loss of 3 wicket. Appeal for leg before wicket. And in fact, off the line, slight a bit of offside the line of off time. So that umpire Anish Padil not interested. So far, it's a quiet over from Kiran. 4 runs came from that over in 5 deliveries. Kiran again. Right arm over, they get balls. Just swings that one beautifully down to deep square leg region. Protection is there in the deep square leg, so that nothing much worried about that slog sweep shot there from Asif. One more run is added to total after completion of over number 3. After winning the toss, elected to bat first. NM cricketers Manglore are 26 for the loss of 3 wicket. They're going really very well. And as far as the run rate is concerned, they're going over 8 runs per over. And the present run rate is concerned 8.33 runs per over. Now 4 overs remaining in the innings of NM cricketers Mangalore, and wait to see how many runs they will going to score in this 4 overs. Absolutely fantastic cricket tournament in the name of United Trophy 2024 Season 3, which is fantastically and wonderfully organized in this beautiful UCG cricket ground by real estate group registered Vijay, and in the cause of raising fund for financially backward children, and definitely it's going to be a good concept from organizer real estate group. Every year they wanted to do something for society, and this is really good to see. Along with the cricket, they are serving for the society. It's 26 for the loss of 3 wicket. From the far end, captain of the side changing his end, and he is coming from Kodaikanal. Right arm over the wicket. Drivan formed it down to deep long on region. Rakshit, the fieldsman, then the deep long on fields the ball. Little bit late reaction coming from Rakshit. He did move first when the ball is after traveling towards long on. He started to move, but he managed to field the ball very well. And with that single scope, it moves on to 27 for the loss of 3 wicket. Taufik will go into face Ranjit, the captain of the side. 11 runs which is came in the first, 10 runs which is came in the first over of the power play. Now he's bowling after the power play. Lovely delivery, beautifully bowled there by Ranjit. Ranjit knows that he reads the mind of the batter very well. Just seeing that batsman shuffled across the line of the delivery. He's just bowling that leg cutter, just going outside the line of off stump, and defeated with a beautiful delivery there from Ranjit. No chance of any run. Score remains on 27 for the loss of 3 wicket. Ranjit again from the far end. Right arm over the wicket to Taufik. Taufik this time driven that one down to deep square leg again. And Mitesh slight a bit of fumble by the fielder at square leg, so that Taufik grabbing this opportunity of fumble. Again they converted that single into 2. Absolutely fantastic running between the wicket by these two batters. 29 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Taufik is a danger man as far as opposition Sneha Malemar is concerned. The man in terrific form will go into face Ranjit. One more, the bowler is in form. Lovely reverse sweep, plays it down to deep cow point region, but not more than a single. And with that single scored Namuzanto, 30 on the board. Both the batters are not really feeling any pressure. They're playing really without any pressure. Even they lost the 3 wickets. That shows both the batsmen, definitely they got a fantastic season from the bat. And runs are coming very freely so far for NM cricketers Mangalore. Ranjit, 5th time in this over. Pass umpire Roland Pinto. Short run up. Right arm over the wicket bounce. This time, oh my goodness, wow, opportunity of run out as well. Looks like maybe ball which is passes between the stumps. My goodness, can you believe this? This is not really happening regularly in the cricket, but sometimes it's happening only sometime in tennis ball cricket, underarm cricket, ball passing between the... Have a look at that one, I want to see that. Oh, that was absolutely right. How the ball is passed. In a negative, if you see that, it's very difficult the ball to pass, because just seeing the size of the ball and the distance between the 2 wickets, we can see that. I'm not thinking how the ball is passed between the 2 wickets. This is really going to be $1 million question here.
31 for the loss of 3 wicket. Very lucky indeed, the batter, Asif. Again, Ranjit will go into ball. Right above the wicket, going for the expansive try. Taufik didn't got bat onto that. Leg by call by umpire. This is going to be a turning out to be a good over compared to his previous over. Ranjit bowled a tidy over. And wait and say, will it going to be good enough for Sneha Malemar after completion of over number 4? Sneha Malemar, after winning the toss, elected to bat first. It's 32 for the loss of 3 wicket, and they're going exactly 8 runs per over. 8 runs per over. Now umpire and wicket-keeper having a conversation. Certainly, the 100% that is a conversation about that ball which is passed between the wicket. And now it's a time to change in commentary box as well. I would like to invite Abu Tahir to take over the microphone and for the 3 overs of the game of NM Cricketers Mangalore in our state language, sweet language, Kannada. Welcome, Abu Tahir. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರೇ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಈ ದಿನದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಬನದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 32 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಮತ್ತು ತೌಫೀಕಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ತೌಫೀಕ್. ಆನ್ ಸೈನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಕಾಲಿಗೆ ಗರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಶಫಲ ಕ್ರೋಸ್ ಆಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಮತ್ತು ತೌಫೀಕ್. ನಂಬರ್ 6 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ರಿಯಾಜ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ 3 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ರಿಯಾಜನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು. ಮತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡ್ವಾಲ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆತೀಫ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ ಕೂಡ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಕಿರಣ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಈ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸುವ ನೋಟದ ಮಧ್ಯ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಕಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿದ್ರು ಆಸಿಫ್. ಆದರೆ ಜಾನ್ಮೆಯ ದಾಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿ. ಕಿರಣ್ ರವರನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಂಡುಗಾರರ ಚಲನ ವಲನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜಾನ್ಮೆ. ಸುಂದರ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಹೇಗರಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ನೋಡಿ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ಸಿಗೆ ತಗಿಲಿ, ಬೇಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್ಗೆ ತಗಿಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಿರಣ್. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಸೆತ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಕಿರಣ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು. ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಆತೀಫ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪ್ಯಾಡ್ವಾಲ್ ಸ್ವೀಪ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆತೀಫ್. 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 35 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು.
ಕಳಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೇದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖೇನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇದು. ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಆತೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆತೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರನ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ಮೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಈ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಆತೀಫ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಣಿಯೂರು. ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಬ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, what an attempt. Oh, last, oh, perfect jump, perfect track, under control. ಇದು ಈ ದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲಿರುವಂತ ಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತ ಕ್ಯಾಚ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಆದ್ರೂ, ಔಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ಜಂಪ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಎಫರ್ಟ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಆತೀಫ್ ರವರ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅದು. ಬಹುಶಃ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವುದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೋ ಬಾಲ್ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಆತೀಫ್ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ರಕ್ಷಕ್ರವರ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ಷಣ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಣಿಯೂರು ಬರುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಗಡಿನಾಡ ಪ್ರದೇಶ, ಬಹುತೇಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕುಂಟಾರು ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ, ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಆತೀಫ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ, 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ರಿಯಾಜ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲ ಅಗಲವಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 36ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಕ್ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡೆಕನ ಎಂಡಿನಿಂದ ರಕ್ಷಕ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಎಂಬ NM ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಟಗಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ರಕ್ಷಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಆಸಿಫನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಸುಂದರವಾದ ಲೈನ್ ಬಾಲಕ್ಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ರಕ್ಷಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಜ್ ರನ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಕ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ್ನ ರಿಯಾಜ್, ಆದರೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ. ಇದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಳೆದೆಲ್ಲ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿಯಾಜ್ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೆಂಡನ್ನ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓವರ್ ಇದು. ರಕ್ಷಕ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 3 ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಓವರ್. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್. ಅಶ್ವಿತ್ ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು NM ಮಂಗಳೂರು. ನೋಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಬಳಕೆ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಸಮಯ ಇದು. ನೋಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಂಘಟಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ನಿಮಗೊಂದು ಲಕ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ಲಕ್ ಟಿಪ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಲಕ್ ಟಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ 20,000 ನಗದು, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 15,000 ನಗದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಲಕ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಹುಮಾನ ಬರದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮೊತ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ, ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ 2 ಒಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡೆಕಲ್ ಇದರ ಮಾಲಕರುಗಳಾದಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಶಿರ್ಕಾಜೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿತಿನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇರುವರನ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
LIC ಇದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ 1,000 ನಗದನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ. ರಿಯಾಜ್ ಈ ಋತುವಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನಬೇಕಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಐಕನ್ ಆಗಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 6ನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ರಿಯಾಜ್. ನೋಡಿ, ರಿಯಾಜ್ ಇದುವರೆಗೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದು 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇದು ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಯಾಜ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಫೈಸಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ರಿಯಾಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಪ್ರತಾಪದ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಓರ್ವ ದಾಳಿಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಇದು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. ಮೇಡನ್ ವಿತ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 1 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್. 1 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಟ್ಟು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 39-40 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಂತ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಈ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 39ಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿದಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ, ರಿಯಾಜನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ರಿಯಾಜ್ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಔಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೋಚಕ 42 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ತಂಡ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಮಂಗಳೂರು ಮುಜೀಬ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಜೀಬ್, ರಿಯಾಜ್, ಆತಿಫ್, ಫೈಸಲ್ ನಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸೆತಗಾರರ ಮುಂದೆ 40 ಗಳಿಸುವರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. 2 ಕೂಡ ಸಮಾನ ಶಕ್ತರು. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ 11 ಆಟಗಾರನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ 2 ತಂಡಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸಮಯ ಇದು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣಗಾರರಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರ್ ಅವರನ್ನ. Hello, check, mic check. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಬು ತಾಹಿರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ the chief guest and one of the big sponsor of this cricket tournament, respected Sanket, the Vivek, and the marketing head of Rai Builders and Estate. And on behalf of all cricket lovers and on behalf of organizer, warm welcome, sir, for this prestigious United Trophy 2024. So thank you very much for your contribution. We are really grateful and thankful for your contribution for the success of this United Trophy 2024 season 2. And Gopi, certainly it's going to be a fantastic comeback, isn't it? The one stage it looks like they are this time. What a shot, what a start here for the team Sneha Malemar. Absolutely fantastic. Just the ball is dipping down outside the line of leg stump. Batsman taking the advantage of that one. Yatin is a man in form for team Sneha Malemar, and he got that one right from the middle of the bat down to deep sky leg boundary for 4 runs. And Gopi certainly under pressure. NM cricketers Manglore. After that they got a very good start, and what a comeback by the bowlers of Sneha Malemar, especially the last over bowled by Pratap. Picked up 5 wickets in 1 hour and making the things a little bit easier for the team Sneha Malemar to get that run. But you can't underestimate NM cricketers Manglore. They are knowing for the bouncing back, isn't it? They also got some very good bowling department, and certainly their bowling will go into tested in this particular semi-final match. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त 40 रन जरूर बनाए, लेकिन अगेंस्ट थी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, और इस बीच ये गेंद थी रक्षक के लिए. गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, गेंद पहुंची इस वक्त शॉट स्क्वायर लेग पर, और लेग बाय का इशारा अंपायर का हो चुका है. तो बेहतरीन गेंदबाजी प्रताप ने की. पारी के अंतिम ओवर में 5 विकेटें उन्होंने प्राप्त किए 1 रन प्रदान करते हैं, और उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत स्नेहा एनएम मंगलूर के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप को 39 रनों के लक्ष्य के स्कोर के अंदर रोक कर रखने में सफल रहे हैं. स्नेहा मालेमार की गेंदबाजी है. गेंद दरियाज की ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और गेंद जाती हुई कवर पॉइंट पर, और इससे पहले की गेंद को फील्ड किया जाता. वाइड थ्रो इस वक्त पहुंच चुका है अंतिम क्षण में. दूसरे रन के लिए 2 कदम जरूर आगे बढ़ाए थे इस वक्त बल्लेबाज ने, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए. देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा चुका है, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर, एक बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, और रियाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, माफ कीजिए आतिफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और सामना करने के लिए तैयार रक्षक. एब्सोल्युटली जाम पैक स्टेडियम इस वक्त बिल्कुल दर्शकों से खचाखच इस मैदान भर चुका है. और दूसरा सेमीफाइनल मैच इस प्रतिष्ठित यूनाइटेड ट्रॉफी 2024 मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ. अगली गेंद रिवर्स शॉट डेलिकेट प्लेड, लेकिन गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड पैन पर, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार जस्ट फुल टॉस डिलीवरी, बट couldn't got that one, and this could be trouble, and he misses. और इस बार इस गेंद पर बाल बचते हुए डायरेक्ट निशाना लगता तो शायद इस वक्त बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी. शायद नहीं, यकीनन उनकी पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन निशाना चुका, और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं. तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ exactly 14 7 overs. Pretty good start for Sneha Malemar.
8 without loss after completion of first over. They scored. That means that now they have to score 32 more runs for victory in remaining 4 overs. That means exactly 8 runs per over they have to score for in 6 overs. In fact, that means exactly 5.33 runs per over they have to score for victory. और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुका है स्नेहा मलेमार. तो सतीश से बेहतर शुरुआत 8 रन बिना किसी नुकसान के पहले की समाप्ति के बाद. Well, 8 runs certainly is going to be a good start, Gopi, because without losing a wicket. This is a point to be noted in this because both of the openers are safe in the first over. But because of that first delivery, which is batter Yatin has got a boundary for that, the pressure is straight away off because 100 is required is just below the 6 runs per over. That's why the 8 runs in the first over certainly is going to be a great start for team Sneha Malemar. But one opportunity is in that last delivery, which is a full toss delivery for Rakshak. Usually he is a baseball player and the baseball coming in the same height, and it was I think it's a bad miss for the baseball player missing that full toss delivery. But anyhow, Gopi, it's going to be a great start for Sneha Malemar, but match which is not yet over. Have to get another 32 runs to win this match, and a lot of hard work is required to get that 32 against NM Cricketers Manglore. Exactly, Satish. A lot of hard work to do at this situation. और जहाँ तक सवाल पहले के ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ into the gap as well. कम से कम 2 रन बल्लेबाज को इस वक्त प्राप्त होंगे और 2 रन बल्लेबाज इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था खूबसूरती के साथ और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के. यतिन और रक्षक रमी बल्लेबाज उनकी इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत है, खासकर यतिन राज जिन्होंने पिछले मैच में 40 रन बेहतरीन 40 रन बनाए थे टोटमोडोस काला के खिलाफ. तो उनकी ओर से एक बेहतरीन पारी यहाँ पर खेलना इस वक्त जरूरी बन चुका है. ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त अपील और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. रक्षक की पारी समाप्त. प्लम इन फ्रंट घोषित. गेंद लाइन पर टिप्पा गई. हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले और गेंद लगभग निप बैक होती हुई उनके बैक लेग पर टकराई और यहां पर अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई. एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट घोषित करने में और इसी के साथ रक्षक की पारी समाप्त हो चुकी है. 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड एंड रक्षक डिपार्ट्स फॉर 3 ऑफ 4 डिलीवरीज. तो अंतिम तौर में मुजीब ये विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके और स्नेहा मालेमार अपना पहला विकेट इस वक्त खो चुका है 10 रनों के पर. तो इंतजार है इस वक्त नए नंबर 3 बल्लेबाज का. वन मोर बैट्समैन, वन मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल. प्रताप इज नॉट कम्स आउट टू द मिडल. काफी अनुभवी बल्लेबाज स्नेहा मालेमार की ओर से एक अरसे से वो स्नेहा मालेमार का प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं. अपार अनुभव है उनके साथ. इस वक्त इस सेमीफाइनल मैच में उनकी उपस्थिति इस वक्त बेहद जरूरी है और देखना यह कि वो यतिन राज के साथ मिलकर किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं. तो गेंदबाज मुजीब फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रताप के लिए अगली गेंद. ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन गेंद गई इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 10 रनों पर. 1.3 ओवर्स बॉल्ड इन द इनिंग्स, 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड दिस इज द सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस. और इस बीच मुजीब एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद प्रताप के लिए इस बार टॉप एज मौका हो सकता है, आसान सख्त मौका और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. प्रताप ने गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा था लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा द बॉल गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट. टॉप एज पर गेंद टकराई और आखिरकार आसान सा क्या शॉर्ट्स को लेग पर जो फील्डर खड़े हुए थे उनके हाथों में पहुंची और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है. देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था और गेंद लगभग मिडल ऑफ स्टंप पर आती हुई ऑफ कटर गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा था लेकिन टॉप एज पर गेंद टकराई और इस बीच ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा सतीश स्नेहा मालेमार के लिए प्रताप का विकेट का पतन कुछ हद तक ड्रॉबैक साबित हो सकता है. Absolutely, Gopi. I'm not really understand why the Pratap is promoted up in the order. Usually he's coming in the middle order stage, and he was not that much of suitable batsman to play in the power play over because he is a very cool customer. And promoted is up in the order, and they pays the penalty for that. Maybe I think this man probably the suitable man to come in the number three position because right-hand combination is always useful for any team, and especially when you are going to chase the runs like 40. It's not a huge ask when
when you need to rotate the strike each and every ball, they need to get some players like Mustafa early in the week, because Pratap is a very key player for the side. Sneha Malemar losing his wicket definitely will going to open the gate for NM cricketers Mangalore here. एग्जैक्टली सतीश, और इस बीच प्रताप का विकेट बहुत ही बड़ा बूस्ट इस वक्त साबित हो चुका है एनएम मैंगलोर के लिए, जैसा कि आपने फरमाया। और प्रताप खासकर पावर प्ले में उतना फायदा उठाने में माहिर नहीं है, और यहाँ पर उन्हें इस वक्त प्रमोट किया गया था नंबर 3 स्पॉट पर, और उनका विकेट गिर जाने के बाद सहज रूप से इस वक्त स्नेहा मलेमार के ऊपर दबाव इस वक्त कुछ हद तक बढ़ चुका है। नए बल्लेबाज मुस्तफा पहली गेंद का सामना कर चुके हैं, जो डॉट हो चुकी है। इस वक्त अगली गेंद के लिए तैयार मुजीब, इस वक्त दाइना तो वो विकेट स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद जाती हुई फील्डिंग की दिशा में एक रन मिलेगा, मुजीब दौड़ा है और इस बार रनआउट का खतरा। इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है, विकेट यहां पर गिर चुका है। मुस्तफा पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ा है, और यहां पर दूसरे छोर के बल्लेबाज थे यतीन वहीं पर रुके रहे, और आखिरकार आसान सा रनआउट यहां पर होता हुआ। सो द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन द बैट्समैन। 3 विकेट्स लॉस्ट for just 11 runs. At one stage, they were 10 for the loss of no wicket, and now they are 11 for the loss of 3 wicket. So that means they are straight away lost their 3 wicket in the space of just a single run, and the pressure is now building up for them. And a fantastic over has been came through from Mujib. 2 overs completed, 11 runs on the board, 3 wickets lost, 29 required, and the ball is remaining exactly 30. रिक्वायर्ड रन रेट 5.80 रन पर ओवर। जहाँ तक का सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो दीक्षित नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए शायद रियाज इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो इस वक्त दीक्षित सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई, और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और फील्डर इस वक्त मैदान पर आ चुके हैं। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेकंड सेमीफाइनल मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर इन दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट यूनाइटेड ट्रॉफी 2024, which proudly organized by Real Estate Group are registered विजय मैंगलोर। और इस बीच रियाज पहली गेंद लेकर तैयार दीक्षित के लिए, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और इस वक्त मिड ऑफ फील्ड को थोड़ा सा शॉर्ट फंड लेग फील्डर को थोड़ा सा आगे उन्होंने बुलाया। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज दीक्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त रियाज की एक्स्ट्रा क्विकर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन फुल लेग गेंद थी, और जैसे ही विकेट कीपर मंसूर के हाथों में गेंद पहुंची, इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उन्होंने इस वक्त विकेट उखाड़ दिया, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। और रियाज एक बेहतर गेंद के साथ शुरुआत यहाँ पर कर चुके हैं। 29 balls left and 29 runs required. The match is now equally balanced. और इस वक्त एक कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है, और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो रियाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट दीक्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट रियाज की गेंद का, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए एक बार फिर से विकेट उखाड़े मंसूर ने, और इस बीच सही गेंद घोषित, गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और लगभग दूसरे खिलाड़ी आकर इस वक्त रियाज का जो कि यहाँ पर उनकी सराहना करते हुए, और जिस तरीके से मंसूर ने विकेट उखाड़े थे गेंद को कलेक्शन करने के बाद, निस्संदेह काबिल तारीफ है। और जहाँ तक रनों का सवाल है, तो इन 2 गेंदों में कोई रन यहाँ पर बल्लेबाज बना नहीं पाए। बेहतरीन गेंदबाजी रियाज की, और दाहिने हाथों पर द विकेट फिर से एक बार रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। 28 balls remaining, 29 runs to get, और अगली गेंद रियाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार स्वीप किया, इस वक्त नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, बट ही गेट्स अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका, कुल मिलाकर 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, स्लोअर प्रोग्रेसिंग हियर फॉर स्नेहा मलेमार, एंड थर्ड ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। द टाइडी बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर बिटवीन द बैट एंड बॉल, और इस बीच रियाज गेंदबाजी करके, यतीन राज इस वक्त स्नेहा मलेमार की उम्मीद की किरण इस वक्त नजर आते हुए सामना
करने के लिए तैयार। और इस बीच रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, वाइड का इशारा और वाइड की इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 27 runs more now they have to score for victory in remaining 27 deliveries। और एक बार फिर से रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त यतिन राज के लिए। इस बार यतिन राज ने गेंद को उछालना चाहा, चूंकि उनका लेग स्टंप पर जाकर गेंद टकराए और इसी के साथ रियाज एक बेशकीमती विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। यतिन राज departs and this is an absolutely big blow for स्नेहा मालेमार। बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, अंतिम क्षण में कुछ हद तक उछाल लेते हुए देखिए किस तरीके से यहाँ पर हैव अ लुक एट दिस इन द मॉनिटर। गेंद इस वक्त आई थी, गेंद को उछालना चाहा और गेंद के लाइन पर नहीं आ पाई, गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे लेग स्टंप पर जा टकराया और विकेट कीपर मंसूर ने इस वक्त उनकी इस गेंदबाजी बेहतरीन गेंदबाजी की दात यहाँ पर दी। तो यहाँ पर सतीश इस वक्त यहाँ पर यतिन राज का विकेट गिर चुका है और निस्संदेह ये विकेट का गिरना स्नेहा मलेमार के लिए बिगेस्ट ड्रॉबैक यहाँ पर साबित हो चुका है। Absolutely, Gopi. It's definitely going to be a big fish in the net for NM cricketers Mangalore, because the way that Riaz is bowled that delivery, that was an unplayable one. Because of course you can see that ball is just looks like its ball is in half volley, and any batsman definitely they go for the drive, and by seeing that line Yatin wanted to get the drive and have a look at the turn in that delivery. Absolutely, that a huge turn in that delivery, ball hitting the leg stump, that shows how deviation that ball has got, and because of that wicket, Gopi, NM cricketers Mangalore looking in top in now in the present position. बिल्कुल सतीश, इस विकेट के पतन के साथ इनम का तख्ता यहाँ पर भारी लगता, वरना बल्लेबाज रंजीत इस वक्त सामना करते हुए इस बार गेंद को मोड़ना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन कीपिंग इस वक्त विकेट कीपर मंसूर द्वारा और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर द बैट्समैन ऑफ स्नेहा मालेमार, बैडली रिक्वायर्ड a partnership in this situation to get back into this match। और इस बीच रियाज गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बीच सामना करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रंजीत और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया लेकिन बेहतर स्टॉप फॉलो थ्रू में और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इसी के साथ बेहतरीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सिर्फ एक रन इस ओवर में रियाज ने प्रदान किया, 2 रन इस ओवर में रियाज ने प्रदान किए और कुल मिलाकर ओवर नंबर 3 की समाप्ति हो चुकी है। 13 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 27 to get in remaining 24 deliveries, that means the required run rate is now gone up to exactly 6.75 runs per over। और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा तख्ता इस वक्त एनएम मैंगलोर का यहाँ पर भारी लगता हुआ, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त स्नेहा मालेमार के बल्लेबाजों को। और बाउंस बैक करने के लिए इन बचे हुए 4 ओवर में उन्हें जीतो मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी होगी। तो जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से मुजीब गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए, और जहाँ तक सवाल है बल्लेबाजी का तो बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज दीक्षित और इस बीच होटल कोडेकाना इनकी ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त मुझे अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज दीक्षित सामना करने के लिए तैयार। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स और क्वाइट क्रिकेट इज नाउ गोइंग हियर। और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करना चाह, रन के लिए दौड़ पड़े, प्रेशर इस वक्त, लेकिन जब तक फॉलो थ्रू में गेंद तक पहुंचे गेंदबाज बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 14 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज मुजीब का, तो अगली गेंद लेकर तैयार इस बात रंजीत जो कि सामना करने के लिए तैयार। काफी दूर दूर तक का फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तैनात, थोड़ा सा स्ट्रेटर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बीच गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई स्क्वायर ऑफ द विकेट, क्लीन पिकअप इस वक्त रियाज द्वारा डीप एक्स्ट्रा कवर पर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने के, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। रन सार
hard to come by at this situation for the batsmen of Sneha Malemar और ये गेंदबाज इस बीच मुजीब अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर तरीके से गेंद को खेला, कवर पर गेंद पहुंची, निशाना इस वक्त लगता तो निस्संदेह बल्लेबाज की पारी यहाँ पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन निशाना चूका और बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। रन सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए और रनों के लिए काफी हद तक संघर्ष करते हुए इस वक्त बल्लेबाज स्नेहा मालेमार मुजीब इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रंजीत के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को दिस इज एन आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ विकेट कीपिंग मेड बाय विकेट कीपर मंसूर। तो इसके लिए वो अंडर आर्म क्रिकेट के बेहतरीन विकेट कीपरों में से एक जाने जाते हैं। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उन्होंने विकेट इस वक्त उड़ा दिए, जैसे गेंद को उन्होंने कलेक्ट किया और ऐसे विकेट सिर्फ मंसूर ही उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे, इस वजह से उन्हें कोई क्षति नहीं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 25 टू गेट एंड 24 टू गेट इन फैक्ट इन रिमेनिंग 20 deliveries. What a match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. और इस बीच मुजीब अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, रंजीत सामना करते हुए मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर कोई फील्डर नहीं, 20 गज के दायरे के अंदर फील्डर को तैनात किया गया है। ये गेंद इस बार रन साइड पर, गेंद को इस वक्त खेलना चाहता लेकिन यहाँ पर खेल नहीं पाए, शायद बल्लेबाज के पैर पर टकरा कर गेंद निकल चुकी थी। एक और डॉट गेंद, हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ यहाँ पर स्नेहा मालेमार के बल्लेबाजों के ऊपर। 19 balls and 24 runs required. The pressure is now building up on the batsmen. They badly required a quick partnership at this stage to get back into this match. और गेंदबाज मुजीब अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को छिछाला मिड ऑफ पर सीधे फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। लगातार डॉट गेंदें खेलने के बाद जो प्रेशर इस वक्त बिल्डअप हो चुका था रंजीत का, वो उसका प्रतिफलन इस गेंद पर हुआ। इनफील्ड क्लियर करना चाहा, गेंद को उछाला लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं, मिड ऑफ पर फील्डर खड़े हुए थे, गेंद उनके हाथों में पहुंची और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा एनएम मैंगलोर आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप। हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले, देखिए किस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच मिड ऑफ फील्डर के हाथों में पहुंचता हुआ और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। 16 for 5, 4 overs completed, 24 needed in remaining 18 deliveries. The required run rate is now gone up exactly 8 runs for just they got 5 wickets in hand. और सतीश आइए माइक्रोफोन पर आपको बुलाते हैं यहाँ पर। तो 24 रन 18 गेंदें, things getting much tighter now in this situation for स्नेहा मालेमार। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त पहले 4 ओवर के खेल का, तो फर्स्ट 4 ओवर्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू दी बॉलर्स ऑफ एनएम मैंगलोर। पहले ओवर में 8 रन प्रदान करने के बावजूद एक बेहतर कमबैक करते हुए 5 विकेटों के बाद में 8 रनों के अंतराल में उखाड़ने में सफल बाद के 3 ओवर में। तो निश्चित रूप से इस बेहतर कमबैक के बदौलत एनएम क्रिकेटर्स का तख्ता यहाँ पर भारी रखता हुआ, लेकिन यहाँ पर स्नेहा मालेमार के लिए मौका जरूर है बाउंस बैक करने का। लेकिन बाउंस बैक करने के लिए सिर्फ 4 विकेटों की मदद से उन्हें एक दिलेर भरी गट्सी बैटिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो यहाँ पर अपनानी होगी और उस गट्सी बैटिंग अपनाने के लिए उन्हें यहाँ पर कड़ी मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी। माइक्रोफोन पर आइए सतीश। So thank you very much, Gopi, and absolutely right. What an outstanding bowling performance here from the 3 opening bowlers of Team NM Cricketers Mangalore. Absolutely, dear, bowled some fantastic overs and dismantling the batting department of NM Cricketers Mangalore with some fantastic deliveries. And bowler will going to continue. Fayaz in the over number 5, and straight away Dixit got a single, just paddle that one down to short mid-wicket region for an easy single. With the single score numbers on to 17 for the loss of 5 wicket in the over number 5 is in progress. This is what the reason, Gopi, NM Cricketers Mangalore captain winning the toss, elected to bat first. This always we are mentioning, whenever the team winning the toss in the evening, they are definitely wanted to bat first, and this is what the reason. But match is not yet over, and still there is opportunities remaining for Sneha Malemar to win this match. For that, they need to bounce back very well with some sensible batting. But the problem here for Sneha Malemar is that all recognized batsmen are in the pavilion. And one hope, which is the previous over, that is the captain of the side, Ranjit, is back in the pavilion. This is an absolutely big blow in that previous over. The Ranjit can be the one man, can change the complexion of the game. He is also back in the pavilion.
Fayaz, right arm over the wicket. This time Dikshit wanted to go for the reverse sweep. Couldn't manage to get the contact with the bat. Have a look at that. The body language, if you see, of NM cricketers Mangalore. This is a huge difference we are watching here. This is a huge difference what body language I am seeing here after a long time. NM cricketers Mangalore. They're typical NM cricketers Mangalore when they are in a peak. This time, Mansoor. Mansoor almost looks like he's thinking about the UCG ground which is belongs to him. And behind the wicket, all the places which is belongs to him. He's almost rolling everywhere. And this is what Mansoor is all about sometime. When you were wanted to give 100% for your team and you are not really bothering about what he is doing here in the middle. And fantastic wicket keeping is in progress from Mansoor for NM cricketers Mangalore. And here is Faisal again, right arm over the wicket balls. This time driven that one down to short mid of range. And again they're going for the quick single. Azim not interested to hit the stump. He knows that of course if the ball misses the stump, any extra runs will going to provide the opportunity for the team to get some important runs. 19 for the loss of 5 wicket in the over number 5 is in progress. What a fantastic semi-final is in progress. Absolutely jam-packed stadium out here in the UCG cricket ground and enjoying the lovely game of cricket. This time again wanted to go for the big shot. Prithvi couldn't manage to getting hold up that one properly. And one more single is added to total 20 for the loss of 5 wicket. One more great over which is completed. And after completion of 5 overs, chasing a total score of 40 to win this match. It's 20 for the loss of 5 wicket. And Gopi, 20 runs which is scored in 5 overs. And they need to get another 20 runs in 2 overs. That's a big difference. The run rate required is 10 runs per hour. At one stage they are below 6 runs per hour. This is what is a big problem. And this is how NM cricketers Mangalore is managed to put pressure onto the NM Sneha Malemar. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा 5 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया इस वक्त एनएम क्रिकेटर्स के गेंदबाजों ने और परिस्थिति को अपने काबू में कर रहा है। तो इस वक्त चंद चौके और छक्के लगाने होंगे कमबैक करने के लिए स्नेहा मालेमार के बल्लेबाजों को। 20 रन चाहिए 2 ओवर में विजय के लिए। और एक गेंद बेहतर गेंद रियाज की, इस वक्त रन आउट का खतरा, स्ट्राइकर इन पर थ्रो पहुंचा लेकिन यहाँ पर निशाना इससे पहले कि टकराए बल्लेबाज 30 रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 1 रन प्राप्त कर चुके थे। 21 11 balls left and 19 runs required. Still really a testing time continuing here for the batsmen of Sneha Malemar in this situation. Kyo Satish? Absolutely Gopi, and what a fantastic comeback. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಂಡದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅವರು ಶಾಲನ್ನು ಓದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ and managing partner of Kodakane family restaurant which is situated in Kadri and one of the most tasty restaurant situated in Kadri. Thank you very much sir for your contribution for the success of this cricket tournament. It's 21 for the loss of 6 wicket and we can see that the noises in the ground, absolutely big oohs and ahs goes around the ground and supporters for both the teams really enjoy the game of cricket. And after the victory in the Yuvaratna Trophy, Gopi, for the team of Sneha Malemar, here we can see that both the teams has got an equal number of supporters. They're supporting their favorite teams. But in this situation, I think NM cricketers, Mangalore supporters, pretty happy to see that they're in the right position of winning this match. But match is not yet over. 2 overs remaining, 20 runs required for the victory. And wait to see how well 2 balls which is completed. And now another 10 balls remaining. Riaz is one of the most matured bowler as far as the cricket is concerned in NM cricketers Mangalore bowling department. The last 2-3 is turning out to be one of the difficult bowler in the department, bowling department of NM cricketers Mangalore as far as hitting the runs is concerned. It's very difficult to hit the runs against this very, very different
bowling action and very um, different bowling action in the sense getting some extra face in his bowling. Again, driven that one down to deep long on region by Prithvi, but not more than a single. This single will not going to help the team Sneha Malemar, but certainly that will going to help if we manage to get in the beginning of the innings. But this time, I think along with the singles, they needed one or two big shots quickly. Otherwise, very difficult for them to back in the game. Riaz from the far end. He's been outstanding throughout the tournament from the ball. Right now over the wicket balls. This time again, quicker one, faster one. That's what I'm talking about. He's a very difficult bowler to tackle. Because of the pace what he has got, it's not so easy. And whenever he's bowling that sharp incoming delivery, there's a little time for the batter to react to that balls. That's why that condition seems to be a very critical here for team Sneha Malemar. 23 on the board. Right above the wicket. This time appeal for leg before wicket. Riaz is confident. Umpire says it is bat and there's no chance at all for any leg before wicket. 23 for the loss of 6 wickets. 6 overs completed. Last over remaining. 17 runs required for the last over. And Gopi, last opportunity. Do you think it is going to be that much of easy to get the 17 runs in last over, especially in this condition, evening in UCG cricket ground? डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट सतीश बट नॉट इम्पॉसिबल. और क्रिकेट में कहावत है, क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए कुछ भी कहना मुश्किल है. क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा एक या दो चौके या छक्के लगते हैं पहले एक दो गेंदों में, तो निस्संदेह यहाँ पर स्नेहा मलेमार के लिए विजय के द्वार खुल सकते हैं. लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट दी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप जो अंतिम ओवर इस वक्त गेंदबाज जो कि इस वक्त शुरू करने जा रहे हैं, तौफीक, उनकी गेंद पर चौका या छक्का इस वक्त लगाने के लिए स्नेहा मालेमार को जरूरत है. वो चौका या छक्का इस वक्त लगाने के लिए इस वक्त उन्हें यहाँ पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी. तो लक्ष्य इस वक्त काफी हद तक कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं. और देखते हैं इस अंतिम ओवर में क्या स्नेहा मालेमार के बल्लेबाज पासा को पलट पाते हैं या नहीं. Yes, Gopi, absolutely. You're right. Rightly said that cricket is a game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket, but getting the 17 runs in the last over in the naked eye and by our personal experience is going to be a huge ask, and we didn't see. Right arm over the wicket, Tawfiq ball. Right arm over the wicket. What are you talking about? The huge ask. Here is the batsman hoisting it over, but not really getting the distance. This is what I'm talking about, Gopi. Of course, 17 you can get in the different condition, the morning condition, where there is a huge wind passing in the ground, where there is no wind at all in the ground. Getting the distance is going to be a huge ask, and that's what happened. Nothing wrong with the stroke of Prithvi, but something wrong with what we are talking about, that condition of the ground. It's not so easy for any batter to get the distance, especially when playing from the far end. So this is what a disappointment score, but you can see that only one batsman has got a double figure, that is Yatin in the top in the order, but all we can see that the single digits. And if getting this kind of single digits against NM cricketers Mangalore, getting 40 is always going to be a difficult ask. That shows how well the NM cricketers Mangalore bowler are bowled here. Definitely they deserve, because of all the hard work they've done for restricting their opposition. And here is the new batter, came into middle. Tawfiq balls, right arm over the wicket, outside the run of off-time, going for the expansive drive. Another dotted deliveries. That means now it's going to be a difficult condition here. 17 to get from 4 deliveries. 3 massive sixes, 3 sixes, the boundary which is required for the team Sneha Malemar. This time lofted, one more opportunity, catching practice for the fielder. And now it looks like the team Sneha Malemar are in more trouble. And last opportunity for Sneha Malemar, because 17 to get from 3 balls. So noises of their children were supporting NM cricketers Manglore going larger and larger. They know that now only 3 deliveries remaining for the celebration here for supporters of NM cricketers Manglore. Now new batter coming to the middle here. I think Mitesh is the batters coming to the middle, and 23 for the loss of 8 wickets. Last 3 balls remaining and 3 maximum required. And 3 maximum required from this little master, Gopi. You can't judge the
player by their height. Just like don't judge the book by its cover. Who knows? Mitesh can hit 1, 2, 3 sixes here. Can change the complexion of this game, isn't it? 23 for the loss of 8 wicket. 23 for the loss of 8 wicket. 3 balls, 17 required. This is going to be decider delivery. Mitesh, this time lovely delivery. This is going to be all over. The door which is almost closed here for Sneha Malemar because 2 balls remaining, 17 runs required for the victory. And you look at the dugout of NM Cricketers Mangalore. Celebration which is almost started. Now 2 balls remaining. Right arm down the wicket to Mitesh. This time wide call by umpire. One more extra with that extra scoreboard numbers on to 24. 16 required from 2 balls. 8 runs per delivery is required run. It's not per over. And here is 16 required. This time Mitesh tries. Not more than a single. No, even they're not thinking about a single. Now last ball remaining for the formalities. For the victory for NM Cricketers Mangalore after a long time in UCG cricket ground. Their managed to get the place in the mega final of this prestigious United Trophy 2024, defeating Sneha Malemar by the margin of 15 runs. And congratulations for the winners for your outstanding performance. Well, what a fantastic performance here from NM Cricketers Mangalore. Now, Gopi, maybe we are talking about the previous 2 semi-finals which is played in the UCG cricket ground. The toss-winning team decided to field first. They lost the match. Here, NM Cricketers